Hi everyone, Krishna this side. So in this video, I'll be covering this case-specific sorting of the strings problem from the Geeks for Geeks, and it's a daily challenge problem that is available. So हाँ, अब इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड जस्ट एक बार बता देना कि कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेज आर पर्सनली फील दैट इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन some of the concepts in both the languages, because my native language is Marathi, and since the childhood I mostly speak Marathi language until I joined the colleges and all. तो हाँ, दोनों लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट हिंदी इज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस आई पर्सनली फील दैट इट कम्स फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग, एंड थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबली मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ हिंदी में एज़ कम्पेयर टू द इंग्लिश. सो मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. अगर समझ आ रहा है अच्छे तरीके से तो हाँ, हम हिंदी के साथ कंटिन्यू करेंगे. And next thing is like towards the end of the video I'll discuss about the job status and what I'm currently doing and all those things also, because so far I haven't joined any company. It's been 6 months. I quit my previous job, and yes, there are a few things, but most of the guys who are not really interested in these stuff, so yes, for them, let us directly focus into the problem, and towards the end I'll discuss about those things as well. So the problem states, given a string S consisting of only uppercase and lowercase characters, the task is to sort the uppercase and lowercase letters separately. Okay, such that if the ith place in the original string had a uppercase character, then it should not have a lowercase character after being sorted, or vice versa. Okay, the question is pretty much clear for us. So what is given? A string is been given, and we have to sort the strings based on the uppercase and lowercase. So let us suppose this is the string that we have, ek. Let us suppose yes, then there is a, then there is another a, capital A. Okay, let us suppose this is the string. So we have to sort these strings based on the uppercase and lowercase. So what are the uppercase characters? Those are e, yes, a, and the lowercase characters are like e, a, k. Okay, so these are the uppercase and lowercase characters that we got from the string, and we have to sort them based on the their uppercase or the lowercase characters. Okay, so these characters, when we sort, how the data is going to be, it is going to be a, e, g, then yes, correct. And these characters, when we sort, it is going to be a, e, and then there is a k, correct. So once we sort this data, right, they already said that we have to sort them based on their uppercase or lowercase letters. Okay, so yes, the best way is like we can separate these characters and we can put them into any array list or some data structures that we can use, and then we can sort these characters. Now once we sort it, like we have to again construct the string. The string construction that we are doing is in a such a way that जो भी characters upper case characters आ रहे हैं, okay, अगर string में upper case character है तो उस वहाँ पे हमें अपर केस कैरेक्टर ही फिल करना पड़ेगा, सॉर्टेड कैरेक्टर जो भी हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स लेंगे. अब ये सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो फर्स्ट पॉइंटर अपर केस को पॉइंट करेगा, सेकंड पॉइंटर लोअर केस को पॉइंट करेगा. अब स्ट्रिंग को हम फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे. जो भी कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग में, अगर वो अपर केस का है तो हम अपर केस का कैरेक्टर अपने पास ले लेंगे, एंड स्ट्रिंग नई कंस्ट्रक्शन जो हमारा स्ट्रिंग का है उसमें हम फिल करते जाएंगे. ओके, next one is like again uppercase character. Okay, this is the string that we have. Okay, I was looking into that one, but yes. So next character is again uppercase character. So again हम यहाँ पे क्या करेंगे, uppercase का character fill कर देंगे. Okay, the pointer is actually moving forward the moment we pick any characters from this strings. Okay, or whatever the data structure that we use to build this data, whatever these characters are there, right? So now EA is done. The next character is actually lowercase character. So हम lowercase character से A pick कर सकते हैं. Okay, so simple, right? So next is again lowercase character. So lowercase character हम इसमें से pick कर लेंगे, next वाला जो भी हमारे पास है. Again हमारे यहाँ पे क्या है, uppercase character. So जो uppercase character है जहाँ पे हमारा current pointer है उसको हम ले लेंगे, fill कर देंगे आंसर में. अगेन आगे का है लोअर केस का, जो लोअर केस का कैरेक्टर जहाँ पे हम है अभी वो वाला कैरेक्टर पिक कर लेंगे. द लास्ट वन इज अगेन अपर केस. सो अपर केस कैरेक्टर हम लेके फिल कर देंगे. नाउ वी आर एंड टू द स्ट्रिंग. सो व्हाटएवर द आंसर दैट वी गॉट, दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू रिटर्न. ओके, pretty much clear. So we will, what we will do is we will get all uppercase character into a array list or any data structure. We'll separate out all the lowercase characters and put them into the array list. We will sort this data. Then while constructing the answers, we will go through the same previous string and check that if it is uppercase, we will pick from the uppercase. If it is lowercase, हम lowercase character से pick कर लेंगे. Okay, that way आंसर हम construct कर लेंगे. So easy है. चलो कोड कर लेते हैं इसको quickly. So what I'll do is I'll create two short array list, and इसमें हम character store कर रहे हैं.
Okay, and this is going to be list. I'll name it as we can name proper way, but I don't want to again write the code with okay list. Then this is lower list. So L list is the name that I have given here. So what we will do is we will go through this string yes dot to char array. Okay. Now in this one, we will keep on checking whether this current character is uppercase or not. So simply we can use inbuilt functions which are like character dot is uppercase or character dot is lowercase. But remember, if you were not able to remember these inbuilt functionalities, so we can do alternative as well. We can check that whether this character is actually greater than or equals to the a. Okay, in that particular limit, if the character is actually available, and it should be less than or equals to z. Okay, if that is the case, it is like a lowercase character. So in the lower list, we will add this character. So whichever the character that we have, or else that character should be uppercase. So in the upper list, we will add this character. Okay, simple. We separated out all the characters. Now just next thing is like sort this data. Collection dot sort list, and then again let me just copy this, put it right over here. Again, lower both the strings actually got sorted. Okay, both the list actually got sorted. Now we have the sorted information with us. We actually have to build the answer. So we will use string builder to build the answer. See, again, I already explained like why we are using basically the string builder instead of string to build the answer, because string builder is actually mutable. So at any point in time, once the object has been created, this object is going to be modified. No new objects are being created. Okay, if I would have used a string, and there are inbuilt functionalities for the string as well, if we try to use with the string, it will keep on creating new objects for that one. Okay, so yes, builder is actually going to be much better than the string because it is not immutable. Okay, string builder is actually mutable, and yes, that is something what we have to remember every time whenever we are trying to write the code. So always try to use string builder, and then at the end, whatever the answers you constructed, you can convert it into the string. Okay, at the end. So again, let us run the same thing. What I'll do is I'll use the same thing again. I'll paste it right over here. The character, we are picking it from them. If character is actually greater than equals to a, less than equals to, that means the lowercase character is there. So in the sb dot append. Okay, okay, whatever the character we are current at, if it is a lowercase character, we will simply append the character into the SB. Okay, we are simply constructing the string. So what we will do, we will get from the lowercase, and the get functionality should be there, and whatever the character we are at. So we should have two different pointers. Okay, to get the data from them. Okay, the first is like y for the lowercase, uppercase. It will be that one. So I get the lowercase character from the lower list and append it into the string. If it is uppercase, so simply we will use again the same thing. Okay, and this x should be getting incremented so that we will pick next character that is available. It is going to be y, it is going to be plus plus, it is going to be list. Okay, this way we constructed the string. Now the simply is we will return it as b dot to string is the answer that we will return. Okay, let's try to run the code and see if we have any issues or errors. Okay, the answer is actually got wrong. EG, yes is something it got. Okay, it should get EK, but yes is something we got. So why is that the case? That is something what we'll try to see here. We are checking that if it is uppercase or lowercase. If it is lowercase, we will append, we will get it from the lowercase and we will append it. If it is uppercase, okay, in the else case, we will go, we will get it from the uppercase, we append it, and we are incrementing the pointer. Okay, this way we are keep on checking, and at the end we are returning the answer. So why it is getting failed? Okay, eg, then it should be the lowercase, right? So the character that we are at. Okay, did we made any mistakes right over here? We are getting if it is a lowercase character, we are getting it from there and adding it in the lowercase. If it is uppercase, we are appending it here. We are sorting both the list, lower upper, we are constructing sy, the ch we are getting from this.
If this character is actually lowercase, we are appending and incrementing, appending and incrementing, then why, where we went wrong? Could you guys point out? Okay, so just think about it, why it is picking again the lowercase, despite knowing that it is a. Instead of this, okay, wait. Sorry for this, guys. See, this should be and, because whatever the character that we are picking, okay, it should basically rely in between A to Z. Okay, so its range should be rely into this one. Okay, it shouldn't be or. So because of getting this or, the problem is like it was directly moving into this one, and it was keep on constructing for the uppercase until we are done. Okay, so yes, that was the mistake, I guess. Let us run the code again. And I hope you guys get what I had made mistakes right over here. It is getting accepted. Instead of this, what I'll do is let me use the inbuilt functions, because I already know that like what are the inbuilt functions. Okay, character dot is lower case. Okay, whatever this ch is there. Okay, that also we can use there. Since I just wanted to explain you guys like, okay, we can use this range, comparing whether it is falling in which range or not. For that, I practically tried showing in that way. Okay, so yes, let us submit this code as well. It is working fine. And now if we discuss about the complexities, the sorting will be going to take, of course, it is n log n, and these for loops are also going to be like big O of n. We are utilizing space, that is going to be big O of n, because both the list, if we add, then only the strings length is something what it will form. So string builder again taking big O of n. So yes, it is going to be n log n. For time complexity, space is going to be big O of n. Okay, that way we can solve this particular problem. Okay, so that's all from this particular problem. Now talking about so all of the guys who were here for this particular solution, they can now leave if they got the answer. Now yes, the next thing is like I have quit the job in month of Jan. My last working day was in the month of Jan. Okay, and they were offering me hike. It was a good hike. I mean, comparing with where I was working, it was a MNC company, and still they, whatever the limit they do have, they were trying to push their limits as well to give the hike for me. But still, they were asking me to come to the office and start working from the office, and that is something really bothering for me, because I do make money from the stock market, and the job is whatever the job I am considering, it should be a remote job. And then yes, I took that step without having any preparation. Also, I was having good backups. If anything really get fails, I really have options to again join anywhere. Okay. So yes, that was the idea. Then it's been now 6 months. The days are easily passing out, and as I am making profits from the market, and whatever the money that I'm making from the market, it is actually the salary that I used to get. It is actually more than that, whatever the amount that I do make from the market. But yes, I do not encourage you to come into the market and make the money from it. I really have struggled a lot. The 4 years, I know like how the days have been passed for me. So yes, that was the reason. Like I'm making money. So today, I mean, I make money in between like 10 to 20K, in between that range. I do make money on daily basis. Sometimes the loss is also near around to the same, but profit ratio is actually high. So yes, the amount that I do make towards the end of the every month is actually big. Today also it gone near around 16, 17, but the market started moving backside, so I have to quit my position, whatever I was having, and then I didn't take any further trades. That's all about this one. So yes, this particular thing was making me lazy a lot, and पहले मैंने बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा lazy बंदा हूँ. मैं आसानी से पैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, बट हाँ, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने पैसे बनाना स्टार्ट किया था लाइफ में. ओके, तो आई एंजॉय डूइंग कोडिंग एज वेल. तो जिस भी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है, वहाँ पे मैंने अपना बेस्ट दिया है. आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट स्टार्टअप को ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं एक एक ऐसा दिन था जहाँ पे मैंने 16 आवर्स तक काम किया था कंपनी के लिए. तो ऐसे एफर्ट्स भी मैंने लगाए है कंपनी के लिए. वीकेंड्स पे भी मैंने काम किया है हर एक कंपनी में, एंड वहाँ पे मैंने कभी भी ऐसा कोशिश नहीं किया था कि लाइक हाँ, ये काम करना पड़ रहा है. तो मुझे जब तक एंजॉय आता है, मज़ा आता है, तब तक मैं चीज़ों को करता रहता हूँ. ठीक है, एंड जब एकदम से ही मन उठ जाता है, तो मैंने चीज़ों को साइड करना भी पसंद करता हूँ. तो अभी अभी क्या है ना, अभी 6 मंथ हो गए, एंड आई वॉज जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉइंग दिस टाइम.
बट हाँ अभी थोड़ा सा मन कर रहा है कि फिर से काम किया जाए अच्छी तरीके से एंड रिमोट जॉब ले लिया जाए कहीं से। तो एक ट्यूरिंग प्लेटफॉर्म करके है जहाँ पे मैंने जो भी इनके चैलेंजेस है वो कंप्लीट कर लिए थे, बट स्टिल देयर वाज फ्यू इश्यूज विद दिस, लाइक दे एक्चुअली वांटेड मी टू क्लियर दिस सॉफ्ट स्किल एंड थोड़ा सा मैंने नज़रअंदाज किया। मैंने जो भी इनके चैलेंजेस है वो कंप्लीट करके रखे थे एंड नाउ आई एम एलिजिबल। प्रीवियसली ओनली आई वाज एलिजिबल टू अप्लाई एनी ऑफ द कंपनीज। तो मैंने एक पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन जो भी है वो भी सेट करना पड़ता है कि कितना पैकेज तुम्हें चाहिए एंड ऑल। तो ये एक सॉफ्ट स्किल का चैलेंज है, इसको मैं लगभग नेक्स्ट इस वीक के एंड तक मैं इसको फिनिश कर दूंगा, सो दैट more and more companies I can be eligible for them and can start applying for them. I don't know, few of the companies I got listed, but still I didn't get anything from their side. I'm not even sure that this page should be shareable or not, but yes, that is the status about this turing. And मैंने कहीं पे भी एक्सटर्नली अप्लाई नहीं किया अभी तक, बिकॉज आई वाज जस्ट बीइंग लेजी, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माय टाइम, बट नाउ अभी मन कर रहा है फिर से ज्वाइन करने का एंड काम करने का। थोड़ा सा ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया था, बट क्विकली अभी क्या करना है, फोकस यही रहेगा डेली। इस चैनल पे मैं लीड कोड के अपना जी जो भी प्रॉब्लम डेली चैलेंज आएगा एंड जीएफजी का डेली चैलेंज जो भी आएगा उसके वीडियोस डालते रहूँगा। एंड एक महीने के अंदर एलएलडी फिनिश हो जाएगा। एलएलडी में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें बस क्लास डायग्राम एंड ऑटो उसी पे फोकस करना पड़ता है एंड जो भी अपनी अलग अलग चीज़ें। तो एलएलडी पे मैंने अभी तक काम नहीं किया, देखो बिल्कुल भी नहीं काम किया था। तो हाँ एक महीने के अंदर मैं इतना पक्का है कि वो फिनिश हो जाएगा। एच एल डी को भी मैं साथ ही साथ फोकस करना स्टार्ट कर दूँगा। डेली एक एच एल डी एंड 2 से 3 एल एल डी प्रॉब्लम्स में स्टार्ट कर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो उससे क्या होगा कि नहीं, हाँ ठीक है, ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। एंड यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग वी आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस एंड जितने भी किसी भी कंपनी के लिए क्रैक करने के लिए जो प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड है वो सारे प्रॉब्लम्स ने पहले ही सॉल्व करके रखे, तो मुझे उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए कभी इशू नहीं आएगा किसी भी कंपनी के लिए, वो पता है। बट एच एल डी एंड एल एल डी राउंड्स मैंने कभी भी किसी भी कंपनी के लिए मैंने सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें। तो उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक महीने के अंदर वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा एंड आई कीप ऑन ट्राइंग टू अप्लाई समवेयर। ओके, एंड मोस्टली रिमोट जॉब ही प्रेफर करूँगा जो भी है। मोस्टली वो ट्यूरिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं अच्छी तरीके से प्रोफाइल बना के वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जॉब लिया जाए। यस, दैट इज़ द स्टेटस दैट आई एक्चुअली वांटेड टू डिस्कस अबाउट विद यू गाइस। एंड जो भी पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े थे, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में इस चैनल पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे मैं अपनी स्टॉक मार्केट की चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक आध हफ्ते के अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को एक्सपेक्टेशन हो रहा है डेली प्रॉफिट देखने का, कुछ अलग सा माइंडसेट बन रहा है वहाँ पे। ओके, एंड वो जैसे सिनेरियो आ रहा है तो एक दिन में ऐसा हो रहा है कि बड़े लॉसेस भी मुझे झेलने पड़ रहे थे। तो मैंने क्या किया कि वो सारी चीज़ें अभी मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी कंटेंट शेयर नहीं करने वाला किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो जो भी पुराने दोस्त हैं मुझे कंटिन्यूसली आई मीन कमेंट्स में मैसेज दिखते जाते हैं कि लाइक स्टॉक मार्केट के लिए हमें जुड़ना है ये एंड ऑल। तो प्लीज़ सिचुएशन को समझ लेना। मैं खुद के अपने सिस्टर को भी नहीं समझा पाया, स्टॉक मार्केट इतना डिफिकल्ट है। जैसे मैंने उसके साथ लाइक मतलब जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सेम ट्रेड उसको लेने के लिए भी मैं इंकरेज करता था, तब भी मैंने बहुत सारी दिक्कतें फेस की है। ओके, तो इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, वहाँ पे इतना काम करना पड़ता है ना, वो बता नहीं सकता। तो जितने भी दोस्त जुड़े हैं, देखो, until and unless I reach to the target that I had set for the stock market, बिकॉज जब मैं वो टारगेट अचीव करूँगा देन आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट मुझे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। उस टाइम के बाद मैं डेफिनेटली अपना नॉलेज स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं शेयर करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। जितने भी दोस्त अगर ज्वाइन किए थे, अगर वो कोशिश भी कर रहे थे, तो उनको भी मैं डेफिनेटली, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम पे भी, तो उनको मैं डेफिनेटली मदद करूँगा। बट अभी के लिए मैं मार्केट के रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला। दैट इज़ द लास्ट स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो हाँ, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन। तो चलिए कोशिश करते हैं एक आध 2 महीने के अंदर किसी कंपनी में क्रैक किया जाए एंड रिमोटली अगर जॉब मिलती है तो बेस्ट रहेगा। ओके, दैट आर द एम्स एंड चलो थोड़ा सा अभी फोकस रहते हैं, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में भी जब जॉब क्विट किया था मैं फोकस रहने के लिए बात किया था, बट मेरा पूरा फोकस अभी भी स्टॉक मार्केट में ही था कुछ 2-3 महीने से। तो यस, वहाँ से बन रहा है एंड अभी अभी इधर जॉब के मार्केट के एरिया में भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड किसी कंपनी में फिर से जॉब करने की कोशिश करेंगे। ओके, that's all from this particular video. I hope you got the GFG problem.
And thank you for watching this one. Bye bye.